Merapiar aur urjão logon ke lihai jinhone ishalia dukat gatnamin apni jangawa. Yaps. It's in the name. I really don't want to make light of this because I know it is such a serious topic. But can Kashmir please get itself together? The worst terrorist attack on Hindus, which is insane to me that we're having this for like religious attack on Hindus in India, in Kashmir. The gangster perspective gives us a good recap on this. Let's just get into this. बहन नमस्ते मेरे भाई। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है इस वक्त जो चल रही है। एवरी सेकेंड आप देख भी रहे हो, नए नए अपडेट्स आ भी रहे हैं। पहलगाम रीजन में कश्मीर में टूरिस्ट पे अटैक हुआ है। इंडियन हिंदू स्पेसिफिकली आदमियों पे अटैक किया गया है। अराउंड 30 के ऊपर नंबर हो चुका है अब तो, और नंबर बढ़े जा रहा है। जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से दो तुम्हारे कश्मीर God, it hurts my heart. My heart and my love, my energy goes out to everyone who's affected, who lost a friend, a family member, a brother, a sister, के लोकल a ही mom, a थे। dad. बाकी 3 हैं शायद जो पाकिस्तान से हैं। काफी कोऑर्डिनेटेड अटैक था, प्लान्ड अटैक था। पहली चीज, जितने लोग भी हम बस प्रेयर कर सकते हैं कि भाई उनकी आत्माओं को शांति पहुंचे। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एपिसोड है कि जिसके साथ हुआ उसकी पूरी जिंदगी अब इसके बाद से डिसरप्ट भी हो जाती है, डिफाइन भी करी जाएगी, और आप इस मोमेंट में जियोगे। आप PTSD जिसे कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग होता है, प्लस एक लाइफ का जो एक कोर्स होता है वो अलग लेवल पे डिस्टर्ब हो जाता है। तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पिताजी के साथ, अगर तुम बच्चे हो, अगर तुम वाइफ हो और तुम्हारे हस्बैंड के साथ, अगर तुम माँ हो तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारे सामने अगर उनको खत्म कर दिया जाए, तो आई डोंट थिंक ऐसी चीज है जिससे इंसान जिंदगी में कभी अब उभर पाएगा। आपने एक्चुअली उन लोगों को भी साइकोलॉजिकली खत्म कर दिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये चीज कोई भूल नहीं सकता। और जब तक तुम ये भूल नहीं सकते, तुम अब नॉर्मल जिंदगी में जैसे जीते थे वैसे अब नहीं जी सकते उस ईज के साथ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान इस कॉन्वर्सेशन में मैं जो देना चाहूंगा वो है, I mean, he's definitely not wrong. If there's just people living their everyday life and then that happened, they're going to be scarred, and it's going to be impossible to return back to that normal life when something as tragic, as acute as that happened in your life. That just can't go away overnight, over weeks, or even months. It's something that's going to stay with you, and it's going to give you a crucible, give you a weight, unfortunately, to hold on to for the rest of your life. Now, what you do with it is going to be up to you, but it will leave a stain. It will leave a blemish, and I hope you wear it hope you can one day be able to wear it and not have just a negative emotion surrounded by it. परिवार को, फैमिली को, उन लोगों को जिन्होंने विटनेस किया, जिन्होंने अपना कोई खोया है, जो सबसे सत्य बात है। सेकेंड चीज आती है भाई, टेररिज्म इटसेल्फ। ये कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड क्रूअल्टी है। यहाँ पे कुछ मनुष्य प्लान करके आ रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, और वो निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल ये कायरता है। वो टूरिस्ट हैं, वो अपने परिवार के साथ आया इंसान, यानी कि सबसे अपनी वल्नरेबल स्टेट में है। वो कोई प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया इंसान कि हम यहाँ पे 50% रिस्क है इस चीज का। इंसान 100% सेफ्टी के साथ एक जगह पे अपने परिवार के साथ वक्त स्पेंड करने आया है। दैट्स इट, दे आर देयर टू एंजॉय। सबसे वल्नरेबल लोग सबसे वल्नरेबल टाइम पे। तो सिलेक्टिव क्राइटेरिया ही देख लो, कितने बुजदिल, दो कौड़ी के, राक्षस प्रकृति के व्यक्ति हैं ये, ईविल जिसे आप कहोगे। सबसे ज्यादा हम निर्दोष व्यक्ति को कैसे चुन सकते हैं, किस जगह पे चुन सकते हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो फाइट बैक करेगा, क्योंकि अपने परिवार He's definitely not wrong when he says it's demonic evil energy. It's exactly what it is. के साथ तो हो सकता लड़े भी नहीं, क्योंकि उसको पता अगर मैं लड़ूंगा तो हो सकता है भाई मैं रिस्क में डाल रहा हूं अपने परिवार को। कुल मिला के मर्डरर्स हैं ये, और कुछ नहीं है उसके ऊपर। जितना ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है या होगा, उतना ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है। ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं टेक्निकली, वरना इतना सारा पैसा इनके पास कहां से आ रहा है। फंडेड भी होते हैं बहुत प्रॉपर्ली ये लोग, पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, पूरे प्लान्स होते हैं। कितने सारे होते होंगे इनमें से ही जो हायर्ड होते होंगे, सिंपल मर्सनरीज। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोगों को रेडिकलाइज भी करते हैं ये, ताकि वो चीज जिंदा रहे, ताकि स्टेबिलिटी ना पाए। आई होप जल्द से जल्द इन लोगों की खोपड़ी में भरने योग्य जितने भी गोलियां हो भरी जाएं, जिन्होंने भी कैरी आउट किए ये,
और इनके पीछे जो भी बैठे हैं, जिन्होंने भी प्लान किया है इन सब चीज़ों को, I know that's the way to handle these things, right? Is to go in there with violence and execute these demons so that they can't continue to perpetrate and just spread hate and anger and misery. But I don't know if there's a part of me that fights against this and just says two wrongs don't make a right. But at the end of the day, you can't just be a doormat and be walked over at the same time. आई होप उनका भी एक दिन आए जिनकी That's खोपड़ियों just में me speaking अप्रोप्रिएट from my अमाउंट ऑफ heart. गोलियां इतनी भर दी जाएं। इनकी वांट ही प्रिडोमिनेंटली केओस है, इनकी वांट ही प्रिडोमिनेंटली कंप्लीटली डिसरप्ट कर देना है किसी भी तरह की स्टेबिलिटी को, ऑफ एनी काइंड। बाय द वे, अभी तुम देखो 22 मिलियन तुम्हारे टूरिस्ट आए थे 2023 में, उन्होंने रजिस्टर किया है। 22 मिलियन अगर टूरिस्ट आ रहे हैं गर्मियों के टाइम पे, तो भाई अच्छी खासी इनकम भी आती होगी, पता नहीं कितने लोगों का घर भी चल रहा होगा। एक झटके में उन्होंने पूरी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया, रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया वापस। जो भी टूरिस्ट के रूट थे एटलीस्ट वहां पे जो भी रीजन था, जितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट थी, सब खत्म कर दिया एक झटके में। तो आप क्या करते हो? आदमी को वापस गरीब बनाते हो, वापस आदमी को कमजोर बनाते हो, आदमी को वापस आप डेस्परेट बनाते हो। क्योंकि डेवलपमेंट हो जो कि तुम्हारा बहुत हद तक सरकार कोशिश करती है, सरकार ने ही तुम्हारा कोशिश किया है टूरिज्म को बहुत तगड़ी तरह से बढ़ावा देने का। टूरिज्म पे बहुत तगड़े लेवल पे पुश किया है सरकार ने ही, क्योंकि इतना सबको समझ में आता है ना कि अगर तुम किसी भी रीजन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ले आते हो, पैसा डाल देते हो, बहुत सारे लोग खुश हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत हद तक प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं जब उनके घर में पैसा आने लग जाता है। भाई क्यों मरना चाहेंगे हम जाके? टूरिज्म बहुत बड़ा एक वार था, मे बी इसके पीछे एक मोटिवेशन यही थी कि टूरिज्म खत्म करो इस जगह पे, वापस गरीबी लाओ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का भी है, जो मिलिट्री सेक्शन है पाकिस्तान का, जो सपोर्ट करती है इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को, वो आप कभी खत्म कर नहीं पाओगे क्योंकि वो वहां से भेजते रहेंगे। तो ये एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है। दिल में आई थिंक हमेशा बात तो ये रहती है कि काश इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाए। परमानेंट इन द सेंस कि इस रीजन में पीस प्रिवेल करे, कश्मीर में इंसान घूम पाए, रह पाए बिना इस खतरे के। काश। And I know Kashmir has such just a history of just violence and cyclical terrorist attacks. It just hurts my heart because it could be a place that's so beautiful if it wasn't just constantly being barraged and bombarded. बट आई थिंक ये चीज़ बहुत दूर है, क्योंकि जब तक आई थिंक चीज़ें इन्फिल्ट्रेट हो सकती हैं दूसरे जगह से, जो कि बॉर्डर से हम सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पार, क्योंकि इतने हद तक फंडिंग से लेकर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से आता है। तो वो जो रीजन हम कंट्रोल ही नहीं करते, तो एक खतरा ऑलमोस्ट हमेशा रहेगा। जहाँ तक अब की बात है, ऑब्वियसली तुम्हारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे विल कैरी आउट ऑपरेशंस आफ्टर ऑपरेशंस, ढूंढने की भी, इनको खोज के निकालने के भी। अब यही उनका फोकस भी होगा इस वक्त। आशा करते हैं, होप करते हैं, प्रे करते हैं कि भाई जल्द से जल्द पकड़े गए ये लोग, इनकी खोपड़ियों पे गोलियां दागी जाएं। इसमें अब कोई दो राय की बात नहीं है कि भाई ऊपर पहुंचाएंगे इनको, ऑब्वियस बात है ये। लेकिन सैड बात यह है कि चीज़ें वहां तक खत्म नहीं होती, क्योंकि वहां से इन्फिल्ट्रेशन चैनल खुला है, और जब तक ये लोग इस पूरे रीजन को गरीब रखेंगे, Yeah. ये No, he's right. He's 100% right. हमेशा वल्नरेबल रखेंगे इस रीजन को। और ये बहुत सैड बात है कि इस रीजन को भी डेवलप नहीं होने देते ये। That's exactly what I'm saying. This region could be a beautiful place, beautiful tourist area up in the mountains, snowboarding, beautiful bridge that's connecting. Oh, there's so much potential there. But once more, it's just constantly being bombarded by this cyclical wave of hate and terrorism. स्ट्रैटेजी भी होगी उनकी, क्यों डेवलप होने दें? डेवलप हो जाएगा तो इनके हाथ से निकल जाएगा ना रीजन। बट दिस इज ओवरऑल वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, अ वेरी सैड डे फॉर अस, फॉर आवर कंट्री, फॉर इंडियंस एंड ऑल माय। I just said day for humans. I hate seeing this. I'm not Indian. I'm American. I'm a proud American. But I love my amigos over in India. I love my Hispanic amigos, my Canadian amigos. I got amigos all over the world. And I hate seeing death, right? Whenever you're down, remind yourself that you are good. And I say that you are good, you are great, you will get better. You are good, meaning that you are the opposite of bad, right? You are on the side of good. You're trying to spread positivity to the world. You are great because you're not a loser. You're putting yourself out there. And true courage is understanding that you did your best, even if you fail, but you're going to give it your damn in the face of adversity. You're going to do it the best that you damn can. And you will get better, because even if you do fail, you understand that you are great. And that this failure is not a failure, it's just a learning lesson, and you're going to apply it to the next thing in life. And
I hope you guys could really take that from this video and apply it into your life. So as I was about to edit this video, I saw this on Twitter and I wanted to add this on here because I think it's good. They asked for names and religion. Then they opened fire. This happened in Pogam, a peaceful hill town in India's Jammu and Kashmir. And this is like, think about this town that if it had 80 years to develop without this terrorism or this cyclical loop, this could be a beautiful place. A region in the north of India controlled fully by the Indian government. 28 innocent tourists were slaughtered by radical Islamist terrorists. Why? And I said I wanted to go to Kashmir and go snowboarding. Ain't no chance I'm going until this is resolved. Because most of them were Hindu. This wasn't just another terror attack. This was religious cleansing, a deliberate attempt to wipe out Hindus from Kashmir. The terrorists, dressed in Indian army uniforms, they were calm, calculated, and deadly. And evil. They approached the tourists in what's known as Look at that, India's so beautiful. Switzerland, a stunning mountain valley where families were vacationing. The attackers asked for names, then religion. Some tourists were forced to recite Islamic verses. Those who couldn't were shot in the head. A newlywed husband, a father with his children, a tech worker, an Indian Navy officer, all murdered for being Hindu in their own country. Now let me ask you this. Unacceptable. If this happened in America, there would be all-out war. Where is the global outrage? It takes the world 5 seconds to condemn Israel for defending itself against radical terror. But when Hindus are executed for their faith, suddenly everyone forgets how to speak. No protests in Pakistan, no outrage in Muslim countries. I can assure you I am outraged, my friend. This is unacceptable. Only India lit candles. Again, let's be clear. These attackers were not freedom fighters. They were extremists, brainwashed with hatred. They were fed decades of lies. Lies that paint Hindus as occupiers in a land they've lived in for thousands of years. These same lies have created sympathy for terrorists and turned the victims into villains. And this wasn't just an attack on people. I don't understand where this idea where the people who are attacking are the victims and the ones who are victims are the ones that perpetrate the violence. Where did this thought come from? Because I've noticed this in America. It's known as like the woke mindset. But this virus has seemingly affected the globe, and it's so weird to see. You have to understand this. This was an attack on identity, on the Hindu presence in Kashmir, on the unity of India. And it's not new. In the 1990s, Kashmiri Hindus were forced to flee their homes as Islamist terrorists targeted them and their children. I think there's a whole movie called The Kashmir Files about this. The world stayed silent, just like now. In 1999, India was defending itself against Pakistan during the Kargil War. Most nations stayed neutral, but Israel stood with India. Israel proved it wasn't just a friend, it was a real ally. And what now? Another United Nations committee, another speech about both sides? Or are we finally going to say the truth out loud? There cannot be peace with people who glorify murder. I mean, this is true. If you look at what they believe in, it's not peaceful. It's just full of hate. If you guys are familiar with Soul Eater, it feels like they're the White Clad, or they're just trying to spread despair throughout the entirety of the earth and turn the earth into a bowling pit of flames and agony and just chaos and despair. Kashmir doesn't need more appeasement. India and Israel are fighting the same war, not just against terrorists, but against an ideology that celebrates murder, one that hates freedom, one that negates our right to exist. Whether it's Hamas in Gaza or Lashkar and Hezbollah in Kashmir, it's the same evil, and it must be crushed. It's time to stop pretending, it's time to stop apologizing, and it's time to start defending your temples, your families, your right to exist. Because Kashmir belongs to India. Bharat will not bend, Bharat will not forget. Share this message. Don't let their deaths be just another headline. Speak, stand, resist evil. With that being said, I'm going to try to leave on a positive message of make somebody laugh, bring a smile to somebody's face,
in this world of chaos. And my heart, my love, my energy goes out to anybody that lost a friend, that lost a dad, lost a mom, a grandma, a grandfather. Death sucks, and it's never a good thing. At least not in this way. But with that said, I'll catch you guys in the next one. Hopefully with something a little bit more positive.